Welcome to the 15th edition of the Jaipur Literature Festival, protected by Dettol Banega Swasth India at Jan Michalski Foundation, Baithak. The festival brochure and flyer with details of the full program are available for purchase at the information desk. We are delighted to introduce Poetry Hour, streaming the multiverse. This session is presented by ABP Live, a series of multivocal poetry readings where different languages, rhythms, and styles converge in a joyous celebration of imaginative possibility. Our panelists for today: Karuna Ezara Parikh, Anukrti Upadhyay, Naveen, Kishore, Nirupama, Dutt, and Mahesh Tyagi, moderated by Lakshya, Datta. Can we have a round of applause for this wonderful panel? Thank you for the introduction. Welcome to Poetry Hour, the last session of the day. So let's just sit back and relax and enjoy these amazing poets on stage. We have about 46 minutes, and each poet, it's a simple format, will have about 8 minutes, and they'll be performing in the order that you can see us over here. So we are starting off with Karuna Ezara Parikh. I'll give you a short introduction. She's a poet and a writer, former television anchor and model. Her work has appeared in Vogue, The Wire, India Today, and Tehelka, amongst others. Karuna's novel, The Heart Asks Pleasure First, was published in 2020, and her first book of poems, Where Stories Gather, was published in 2021. Karuna, you may take the stage. Hi. If we can just turn it a bit. Is that? No, I want to do that. Oh. Okay. But I think your voice should be audible. Each of us will be coming up towards me. Just Hi. So to begin with, I thought I'm going to read a little bit from the introduction to my book, which is Where Stories Gather. I didn't want to read 8 minutes of poetry, so I thought I'll read a little from the introduction because it deals with poetry and with my journey of poetry, and I hope that it resonates somewhat with you. And perhaps once I'm done, if we have time, you can let me know, and I can go ahead and read a poem as well at the end. Okay. Am I audible? Is it? Yeah? Okay. In 2014, I was in Berlin for the summer under excruciatingly sad circumstances when I picked up a pen and jotted a poem onto a post-it. On a whim, I uploaded it to social media using the hashtag the Post-it Poetry Project. I figured that by naming the thing, I would be forced to write more for it. Life, as it does, got in the way. But abandoned by me as it later was, the idea did put in me the habit of writing poetry daily. And in 2015, I wrote what my friends refer to as the Paris poem, using a slightly different format. And being a child of the millennia, a new hashtag, Pray for the World. The impact of that one poem led to a certain degree of acceptance within me. Maybe I was a poet. The apprehension that I had never seriously studied or learned poetry. Even now, like a child, I discover again and again that there are mighty ancient systems in place which I haven't paid heed to. That there are, I've listed a whole lot of different kinds of poems, from feminine, masculine, oblique, perfect, rich, scarce, that there are all these kinds of poems. Knowing these exist fills me with awe and then quickly with regret and even sometimes shame. Where do my poems lie? I ask myself, panicked. In an age when Instagram poets are ubiquitous and the discussion about their popularity and merit intermittently but consistently flares, it is terrifying to put out one's work. While it is an old fear for writers that their words may not be well received or worse, be misunderstood, the social media writer deals with a different and daily anxiety, counting self-worth out in likes and followers, often confusing something as personal as poetry with something as fickle as popularity.
From this space, it is even harder than usual to know the difference between what is truly good and what you are, consciously or not, putting out for instant gratification. What you have written to cleanse or challenge or give of yourself, and what you have unknowingly written to please others. What is, dare I say it, the heart's gimmick? This is maybe why it has taken me so long to put out a book of poems. The truth is that in the wake of an available but shifty audience, I have been distrustful and therefore also disdainful of my own work splattered across the internet. In the process, I have done it dishonor. Putting together Where Stories Gather has been a difficult task, sifting through years of work online and in notebooks, but also writing new poems, sometimes buoyant, sometimes heavy with the knowledge that they have the gravity of the published page ahead of them. Funny how something on the internet lasts forever, and every copy of a book can be destroyed, yet it is in the tangibility of the latter that we dock permanence. With this feeling, I have torn into the writing, rebirthed it, immersed myself in the absolute privilege of creation, and even then, some days, come up wondering if I am saying anything of value at all. But I have also been forced to ask, if only for the sake of steadfastness, if the profundity of a poem is diminished by, say, its length, or where it was first published, and if its impact is then diminished by a lack of profundity at all. If a single line has the power to move a single person, has its purpose been fulfilled? And if it affects someone, anyone, other than its own writer, by being expunged from that writer's twisted heart, is it valid then to publish it? Eventually, there comes the realization that it is only the writing of it that matters. The rest, all of it, all this, is simply grace granted. Because poetry is so bare and honest a medium, reading one's own work is often like sitting with your family members. As with those other complicated relationships, you may not always like what you see. You cannot help but love it, of course. Love is inexplicable. It comes from knowing fiercely what is ours and wanting to protect it. Like hate, it is beyond us. But like is optional. And with poetry, the liking is as personal as with, say, a parent, a sibling, or a daughter. If I perceive shallowness there, it is because I know I have not gone deep enough. It leads one to admit, I do not like this flaw in them because it calls forth my own fault lines. But they are not less loved. And ipso facto, this may not be perfect, but I am not unloved. In my scribbled notes for this introduction, it says, poetry has been the backbone of my life's experience, the knotted rope spine which I continue to climb. I pondered this line and thought, yes, poetry has supported and even elevated me, but it is truer to say that it has been my companion. From my father reciting whole passages of the Rubaiyat of Umar Khayyam, to my uncle doing Dylan Thomas better than Richard Burton, my mother's love for Rilke, my school principal stopping the morning assembly to read us Harai the Heavens, or Tagore, my aunt introducing me to Maya Angelou, my college friend's devotion to Ghalib, my husband writing poems with me line for line in the early days of our courtship. Poetry has tread softly all the corridors of my life. It is hard to remember a time before I didn't always have three things in my bag: a book, a journal, and a pen. This has been their whispered song: listen, tell, absorb, expel. And so I found that reading and writing were the only things that calmed me, or my need to bear witness, the thing that eased my heart and brought not just light but radiance to my darkest days and showed me a path by which to continue on and process the sometimes seemingly impossible journey of life. The poems here, more than anything, are pieces of the processing. And if I am finally to answer for myself the question of what bears publishing, I must simply accept that I have been inordinately moved time and again that my methods of processing resonate with others. Ironically, though my poetry and my writing of it was always a solitary act, often prompted
by a feeling of immense isolation. Sharing it is what helped me realize how very many of us are here in this together. Thank you. Do we have time for one poem? Short one, long one? 1 minute long? Very kind. I'm going to read a poem called Hearing Jangan Man precisely mid-August. Coming in on the end of Shravan, somewhere in the close distance, across the almost autumn park, I hear Jaya He, Jaya He. My heart stands up, I try to swallow it, but it is so swollen with sudden identity, I feel cheap, like aching for a lover because of Julia Roberts. I may as well brandish a satin tiranga and call it silk. Aren't I better than a patriot? Aren't I more than a heartstring pulled ferociously by song, by fucking anthem? I am collapsing against myself and the hard memory handed down ancestrally, blood to blood, so to speak, of battles fought, of country uncut, of freedom and trysts with what was meant to be ours. When were we last proud in the now, without anthem or flag, bringing pride and then downfall? Bringing forth sorrow like a wound, like the parting of earth like skin? Before, in a village in Gujarat, my grandfather's neighbor used to call out to him, offering biryani with saffron and succulent meat each Eid. I talked to the dead. I asked this strict vegetarian ancestor, Dada, how did you eat it? He laughs, won't tell me. Instead, he tells me how they played cricket between unpartitioned courtyards, him and his neighbor Akbar Ali. Technically, he is still our neighbor, he says in the dream. Today, both sides say, the ball's in your court, confusing stuff in a game of bluff. Thank you. Thank you, Karuna. Our next poet is Anukrti Upadhyay. Anukriti writes fiction and poetry in both English and Hindi. Her works include the twin novellas, Daura and Bhaunri, a novel Kintsugi, a short story collection titled Japani Sarai, and the novel Neena Aunty. Her writings have been published in Scroll, Kitaab, the Bombay Review, the Bangalore Review, the Bilingual Window, and several Hindi publications. Anukriti, the stage is yours. Thank you, Lakshya. Thank you, everyone. Karuna has said everything a poet really thinks about when we are writing, crafting, working on, sweating blood on our poems. So I cannot add anything to it. Every word resonated. मैं अपने को मूलतः कवि मानती हूँ, हालांकि बहुत कम मुझे कवि मानते हैं. कविताएं मेरी बहुत कम प्रकाशित हुई हैं, गद्य बहुत प्रकाशित हुआ है, गद्य पढ़ा गया है, कविताएं कम पढ़ी गई हैं और शायद कभी नहीं सुनी गई हैं. कविता में मैं एक तरह की भाषा की आंतरिक लय की हामी हूँ. तुक नहीं, तुक अतुक बेतुक सबके लिए जगह होनी चाहिए कविता में. आग, राग, राख, पंछियों के पाँख सबके लिए कविता में जगह है. इसी आह्वान से मैं कविता पाठ शुरू करती हूँ. पहली कविता है मेरी भाषा. मेरी भाषा, तुम गूंगे का गुड़ हो और अंधे की लाठी. तुम अगर 100 सुनार की हो तो एक लोहार की भी. तुम नॉर्मल तेल हो जिसके पुरने की प्रतीक्षा में घुंघरू बांधे नाचने को सन्नद्ध खड़ी है कहानी की राधा. तुम मेरी आँखों में पड़ी रेत हो. तुम मेरे गले का तौक हो. तुम वह सोना हो जिससे मेरे कान टूट जाते हैं. तुम नौलखा हार हो मेरी भाषा, और एक कौड़ी की भी नहीं. तुम मिट्टी का माधो हो और डेढ़ सयान. तुम धोरों का खेजड़ हो, आँख में उगा ईख हो, सुने खेत को महकाती काचर हो तुम मेरी भाषा. मेरी गुदड़ी की लाल, मेरी मिट्टी का ढेल, मेरी लकड़ी, नून, तेल, मेरा घर, छप्पर, छावनी, सिराहना, पैताना, पोतड़े, चुनरी, कफन, मेरी दुखती रग मेरी भाषा. मैं तुम्हारी सौंधी सांवली छाह में बैठ लोहे के चने चावना चाहती हूँ. तुम्हें अपनी कंटीली कमज़ोर बाहों में भरकर झकझोर देना चाहती हूँ. मेरी भाषा, मैं तुम्हें जागना चाहती हूँ. तुम कलम, क्रोशिया और कुदाल हो मेरी भाषा. कागज़ी फूल हो, पत्थर की मूरत या तलवार नहीं हो.
सूत न कपास पर कोल्हू से लट्ठम लट्ठा करने वाले लकीर के फ़कीरों से तुम्हारा क्या सरोकार? तुम किसी की गाय नहीं कि हाँक ली जाओ। मैं तुम्हें नाथना साधना नहीं, तुम में सधना चाहती हूँ। मेरी सूद नीक, करील कदम, खादर बांगड़, चंबल जोहर भाषा, मैं तुम में जागना चाहती हूँ। मेरी अगली कविता मेरी माँ के लिए है, जिन्होंने हमेशा से, इससे पहले कि मैं जानती मैं कवि हूँ, वे जानती थी कि मैं कवि। तो ये बात, और मेरी माँ यहाँ श्रोताओं में हैं और मेरी हमेशा की श्रोता रही। ये आपके लिए है मम्मी। मेरी माँ फ़ोन पर बताती है मुझे मेरे जन्म के शहर का मौसम। बड़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ, और हवा की तो हवा को भी हवा नहीं। टीवी पर कह रहा है मौसमविद, पश्चिमी विक्षोभ ने बिगाड़ दिया है मौसम। तुम ही कहो, पश्चिम को जो हो क्षोभ, तो क्यों कर पसीने छूटे पूर्व के? वह हंसती है। मेरी माँ की हंसी चंद्रिका और चमेली फूलों से अधिक उजली है और स्निग्ध। वह नहीं जानती, लेकिन उसकी हंसी में भूत और भविष्यत दोनों काल हैं, और उन दोनों के बीच का वह बहुत छोटा अंतराल भी, जिसमें मेरा बचपन और लापरवाह तबीयत, तुकबंदियाँ और सपने अभी भी बचे हैं। मेरी माँ अपनी हंसी के पीछे छुपाती है तरह तरह के डर, महामारी, दूरी, युद्ध और डर जताने के नामहीन डर। मैं सोचती हूँ शायद यही अनजताए डर पैदा कर रहे हैं महासागरों में विक्षोभ। लेकिन इन सब के बीच भी भीतर की गीली ताजगी में खिली मेरी माँ की हंसी मेरे गमले के गुलदाउदी फूलों से कहीं ज़्यादा सजीली है। एक कविता, अगर आजकल के माहौल में आप इसे राजनीतिक माने तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। इसका शीर्षक है संकट। देखो संकट आया है, राजमार्ग पर छाया है, फिसल रहे पद अस्थिर, रक्त आंधियाँ आती घिर, धूल नेत्र में कंठ तपे, जिह्वा पर विषदंश जले, जनमन पर घेराया है। देखो संकट आया है, घंटे गिरजे व्रत रमज़ान, कव्वाली रत जगे अजान, मुहिम बने हैं युद्धों के, टोल जुटे हैं गिरद्धों के, बिखरा सब सरमाया है। देखो संकट आया है। देशपति धर्मज्ञ सुजान, नेता वक्ता और विद्वान, वाक वितंडा फैलाते, हिंस्र अहम को सहलाते, निज पर को भरमाया है। देखो संकट आया है। तरह तरह के हैं हथियार, सबसे पहले है स्वीकार, मानो वह जो जायज़ हो, वह भी जो नाजायज़ हो। प्रश्न सभी बेमानी हैं, सीमा पर सेनानी हैं, कुछ तो उनका ध्यान करो, देशद्रोहियों शर्म करो। सबसे ऊपर नेता हैं, वे चिर से ही चेता हैं, रोज़ नए इतिहास गढ़ें, रोज़ हवाई किले चढ़ें। झूठ सत्य का क्यों हो भय, भारत माता की है जय। बड़ा है नेता हर मद से, संविधान से, संसद से, आओ सब निज स्वार्थ तकी, मूक भेड़ चुपचाप हंकी। जनमन की क्या पाए था, चुनते हम ही तानाशाह, आँख मूंदते पहले हम, पैर तले रुंधते फिर हम, यही हमें मन भाया है। देखो संकट आया। Thank you, Anukriti. Our next poet is Naveen Kishore. Naveen ji has been running Seagull Books for now 40 years, sir? Four Yes. decades, 40 years. So I just want to quickly introduce him. Many of you already know him, but I will just tell you that he's been running Seagull Books since 1982, a publishing program in the arts and media focusing on drama, film, art, literature, and cultural studies. He's a photographer who has extensively documented female impersonators from Manipuri, Bengali, and Punjabi theater practices. Some of these pictures were exhibited as a part of a show titled Woman/Goddess, and more recently, his exhibition Green Room of the Goddess. He's the recipient of the Goethe Medal, the 2021 Ottaway Award for the promotion of international literature, and the French government has awarded him, I'll translate in English, as a Knight of the Order of Arts and Letters. Naveen ji, the stage is yours. Thank you. I'll be reading from my recently published book, Knotted Grief.
This is a section called Selected Griefs. That Sunday again, filling its lungs, breath, from a fly buzzing stifling, stifled, afternoon breath, wheezing scream kettle, steam, whistles a stolen farewell. Rain taps on window, on door, turns its back on the light. That Sunday again. Where will you be this summer, wind mother, when the temperatures rise like memory and the train tracks refuse? The haze diminishes, the distance of not arriving nor getting there, where the mirror glints there, where the one doesn't greet the other there, where the haze diminishes, where the one doesn't meet the other, nor the distance of not arriving nor getting there, where the mirror glints there, where, to hell with it, I'll write you a letter and post it. This is from a section called Street Full of Widows. Across the barbed wire, bisecting the curfew, stand three women, their bodies covered in black. Only the red of the eyes guides them to the graveyards. Covered in snow this month of August, foretelling the bitter winter. Watch the men run, die. Streets full of widows. The deserted street allows the child to play hopscotch. She hops on one leg, then the other, muttering names of missing friends under her breath. The lake waters listen in silence. No one speaks ill of the dead. No one speaks. Tongue hidden deep in your throat, you swallow. At the end of the longest street, crouching shadows awaiting transport. Just when you think you've seen enough, the night explodes and another day begins. There are no more white lilies in the valley. And I will end with this. Stage the blues, she said, to no one in particular, and much to her delight, I imagine, the stage she had strayed onto in that vast and empty auditorium turned a shade of silvery blue as she kicked off her bebop, rebop sandals, flung back wingwards, and humped her way swiftly, like a modern-day ballerina dancing the emptiness. The time tapper staying in tune as the shadows dogged her blurs and her slurs, as the swing band raced, even raised its tempo brrs and grrs and shido-tido gooba-gooba, a salt and a tumbleweed lightness as she flung herself right and down to the floor, raised swiftly to the ceiling, rolled, rock-socked into a rippity-yippity blues, as the frenzied and the fancied finger-snapping twos and threes came out with their maves, singing under their breath about summer, marching in to when the saints came marching in, and love is in the air, and you could hear their hearts beating as they circled around the girl, now spinning like a machine drill, boring her way through the stage floor as she begins her descent. Thank you. Thank you, Naveen ji. Our next poet is Nirupama Dutt. Ye wala mic. Can you check it?
So Nirupama ji is a poet, journalist, translator, and literary columnist. She penned the biography of Punjab's Dalit icon, The Ballad of Bant Singh, and a translation into English of Gulzar's anthology of poetry, Pluto, an anthology of Punjabi stories, Stories of the Soil, and the biography and poems of Lal Singh Dil. I just want to quickly add that Nirupama ji is such a trooper. Last night she broke 2 bones on her foot and she's up here on stage, so please welcome her to the stage. You know, the old poets have constantly to fall to be able to write, fall in love and fall in bathrooms. But the temptation to come and read was very great. And here I am. I write, I travel between languages, the 3 languages that I can read and write, Punjabi, Hindi, English. I started writing poetry in Punjabi. The heart has its own reasons. You want to reach out to certain people, so it had to be in Punjabi. So, and I also translate my poems almost simultaneously into English, sometimes into Hindi. So I'll begin with a short poem in Punjabi. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਪਾਏਂਗੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਲਵੇਂਗੀ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਣੇਂਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਆਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਸੌਗਾਤ And now I come to a more recent poem, Neela Muffler, but I've translated it, The Blue Muffler. The blue muffler has an uncanny knack of turning up in my life now and again. Years ago, in an audience cinema morning show, Gulzar's lilting lyrics break the silence, spotting love in fragrance of eyes. My tears spill. He takes off his blue muffler and places it in my hands to sob into. My first touch with the blue muffler. Years later, another blue muffler. In the windy auto rickshaw ride on a cold winter's night, from his barsati to mine, he unwinds it from his neck and ties it like a scarf over my flying hair. My second touch with the blue muffler. And now, in the awkward moment of adieu, we stand, avoiding a word or a glance. I put my arm round his neck, and before I know, I have muffled a kiss into the blue muffler. And he returns one into the green stole round my shoulder. I somehow know it is my last touch with the blue muffler. And there's a little one inspired by my granddaughter, who's somewhere here in the audience, who's not quite sure what her grandmother is about. It's called Post Office. The school took us to the market today, and we saw a post office there. Tell me, Nani, what is a post office? The 4-year girl knows the market, but has no notion of a post office. Trying to tell her what a post office is, 100 memories stir my mind.
and I hear a Punjabi song in which the unlettered folk heroine promises the Munshi 5 sugar crystals if he were to write a letter for her to her love. The little one chirps again. We also saw a letter box. Nani, what is this red box? I tell her that many years ago, Nani used to write letters to good-looking boys and put them in this red box and wait endlessly for a reply. Tired of my rambling, the young one, an expert on her mother's phone, tunes into the YouTube and dances to the beat of मैंने सैया जी से आज ब्रेकअप कर लिया. So our final poet, Mahesh ji, आप स्टेज पे जाएंगे? वहीं पे चलेंगे, आप चलिए. So Mahesh Chandra Tyagi ji, he is a retired district educational officer from Bikaner. He's the author of the upcoming anthology Sach Kehta Hoon. Please welcome Mahesh ji to the stage. प्रिय श्रोतागण, मेरे विषय में मॉडरेटर जी ने सब कुछ आपने बता ही दिया है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा. सीधा हिंदी की कविता पढ़ूंगा और मैं समझता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी अगर आप लोग हिंदी जानते हैं तो. मुझे लगता है कि यहाँ सब इंग्लिश के आदमी बैठे हुए और हिंदी शायद कम समझ पाएंगे, नहीं फिर भी मेरी तरफ से आपको ये कविता पेश है, आप सुनिए. कि आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है. 2-4 दिन की जिंदगी फिर किस लिए तकरार है, 2-4 दिन की जिंदगी फिर किस लिए तकरार है. आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है कि जो भी प्यार से मिला उसे गले लगा लिया, दूसरों का दर्द दिल अपने दिल बसा लिया. छलकी अगर किसी की आँख आँख अपनी रो उठी, तड़फड़ा उठा ये दिल दिल में पीर जो उठी. तो जिंदगी यूं ही कटी उम्र पल पल घटी, न पहले कुछ सरूर था और न अब खुमार है. आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है. आदत कभी नहीं रही कि हम किसी की जान लें, हर वक्त धुन सवार है कि हम किसी को प्राण दें. ये जिस्म क्या है आदमी का जिस पे इतना नाज है, अरे मिट्टी का एक खिलौना है कल हो न हो जो आज है. तो फिर गरूर किस लिए, फिर गरूर किस लिए, नशे में चूर किस लिए, फिर गरूर किस लिए, नशे में चूर किस लिए. कि जिंदगी तो 2 ही दिन मौत सिर सवार है. आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है.
अगला छंद है, हम मानते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये वो आज आपने कुछ नहीं, इंसानियत होनी चाहिए कि छोटे बड़े में फ़र्क क्या, इंसान हैं सभी, दुनिया तो एक सराय है, मेहमान हैं सभी, कोई बसेरा कर रहा तो कोई चल दिया, हुकूमत में उसकी कब भला किसने दखल दिया, आया है जो भी आदमी जाना है उसको लाजमी, अरे इस तरफ चिता जली खुद ही उधर मजार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है। अगला छंद है, हम कहते हैं बड़े जवान हैं, बड़े खूबसूरत हैं, सब कुछ है, सारी बात है, लेकिन क्या भरोसा क्या आगे सामने आ जाए। सुनिए कि शाम होते ढल गई रूप की जो धूप है, शाम होते ढल गई रूप की जो धूप है, श्वास जब निकल गई तो रूप भी कुरूप है, तो रह गए महल धरे शमशान सा निवास है, 2 गज कफन ही आदमी का आखिरी लिबास है। कि साथ कुछ जाता नहीं सब कुछ तो रह जाता यहीं, साथ कुछ जाता नहीं सब कुछ तो रह जाता यहीं, फिर कर रहा है किस लिए ये, फिर कर रहा ये किस लिए इंसान मारा मार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है। अगला छंद है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, और मुझे आदमी चाहिए, अपने लिए रकीब है न है कोई अजीज ही, हमको तलाश आदमी की आदमी सी चीज़ की, आदमी अगर मिले तो जिंदगी निसार है, खुदा भी कुछ नहीं हमें जो आदमी से प्यार है, खुदा भी कुछ नहीं हमें जो आदमी से प्यार है, इंसानियत पे मर मिटे हम तो चाहे सिर कटे, इंसानियत में ही छिपा परवरदिगार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है, आदमी हूँ आदमी से मुझको प्यार है। अभी टाइम और है। दूसरा, इस संसार के बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैंने दुनिया भी देखी है, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी, अच्छे भी मैंने देखे हैं, देख लिए मन के काले भी, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी। तो कथनी करनी में दूरी इतनी जितनी गगन से दूर धरा है, ये है आज के ज़माने में हम लोगों का, दुनिया का ये किस्सा है कि कथनी करनी में दूरी इतनी जितनी गगन से दूर धरा है, होठों पर अमृत की बूंद किंतु हलाहल हृदय भरा है, ऐसे लोगों से क्या नाता, ऐसे लोगों से क्या मोहब्बत, वैसे लोगों से क्या नाता हो, जिनके लिए है स्वार्थ ही सब कुछ, स्वार्थ में जीवन वो बिताता हो। तो देखे हैं मैंने प्रतिदिन, देखे हैं दिन प्रतिदिन मैंने लोग लुटेरे रखवाले भी, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी। दुनिया का हाल सुनाता हूँ, क्या है दुनिया। दुनिया की हर बात निराली और निराले इसके ढंग हैं, कैसे कोई इसको समझे, इसके यहाँ बहुत से रंग हैं, कपट भरा रग रग में इसकी छलना, इसका शस्त्र अनूठा, जो भी चढ़ा दाव पर इसके, इसने उसे उठा कर पटका। वास्तविकता है नहीं, जो भी चढ़ा दाव पर इसके, इसने उसे उठा कर पटका, कि जो भी देखा रोते देखा,
जो भी देखा रोते देखा, रोते देखे हंसने वाले भी, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी। इस छंद पे मैं आप पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गौर के साथ में एक एक पॉइंट को पकड़ना। आज क्या स्थिति है? कौन किसी को रोता जग में, जग रोता है केवल सुख को, सुख को मिटता देख यहाँ पर, याद किया करता जग दुख को। सुख दुख की छाया में रहकर इंसान जहाँ से चला जाता है, इसके बाद न नाम कभी संसार में उसका लिया जाता है। दिन दो चार तो रो लेते हैं, दिन दो चार तो रो लेते हैं, हंसने लगते फिर घर वाले भी, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी। 2-4 दिन रोगे, बाद में बस सब ठीक है, गया गया, मर गया जी है, कुछ नहीं। तो प्रीत की जीत नहीं है जग में, प्रीत की जीत नहीं है जग में, केवल पैसा ही जीता है। प्राणी है ये खून का प्यासा, मानव से भी गया बीता है। थोता चना घना बजता है, ऐसा ही विश्वास जगत का, और नमन सभी शक्ति के सम्मुख, पात्र नहीं निर्बल स्वागत का। निर्धन निर्बल ही क्या जग में मरते देखे धन बल वाले भी, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी, मैंने दुनिया भी देखी है, देख लिए दुनिया वाले भी। अगला छंद है दुनिया वालों मुझे बताओ, ध्यान के साथ सुनिए इसको। दुनिया वालों मुझे बताओ, तुमने किस पर उपकार किया है, किसको गले लगाया तुमने, किसको गले लगाया तुमने, किसका कब उद्धार किया है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, जब तक स्वार्थ नहीं सद जाता, इसके बाद न तू मेरा है ना मैं तेरा हूँ रह जाता। इसके बाद न तू मेरा है ना मैं तेरा हूँ रह जाता। किसका अब विश्वास करें हम, किसका अब विश्वास करें हम, देख लिए दम भरने वाले भी, मैंने दुनिया भी देखी, देख लिए दुनिया वाले भी, अच्छे भी मैंने देखे हैं, देख लिए मन के काले भी, देख लिए मन के काले भी। धन्यवाद। थैंक यू महेश जी। आई फील लाइक हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन महेश जी आप तो शो स्टॉपर बन गए। आई फील लाइक आपको कोई फॉलो भी नहीं कर सकता वैसे भी। I want to thank you all for coming to Poetry Hour today. I want to thank our amazing poets again. Please give a round of applause. Mahesh ji, Naveen ji, Anukrti ji, Nirupama ji, and Karuna. Thank you all for coming. Please do join us again tomorrow for Poetry Hour at this place, this 5:40 p.m. We're going to have a brand new set of poets for you. And a final round of applause for the Baithak team for running this festival and the volunteers who've been helping us out all day. Thank you so much.